welcome back dear student in the risk biology. Now we are going to the part number 9 of the biological classification. So today we are going to the study of the plasma membrane. Previously like studies about the cell wall and which type of cell wall, like that the gram positive cell wall, gram negative cell wall. Now we are starting the plasma membrane of the bacteria. Let's see. They are the whole structures of the plasma membrane of the bacterial cell. Almost of plasma membrane structures of plasma membrane like that the eukaryotic membranes. Okay, so let's see. Firstly, that's a cell. That's a cell. This part enlarged. That's like plasma membrane is the made up of the two main things. First, lipid and second, protein. Second, protein. Uh, these two things are important role play in the formation of the plasma membrane or cell membrane. Cell membrane is that structures are any product out go outside from the cytoplasma and come inside from the outside. That's a that means say that this plasma membrane is the permeability. So the permeability, selectively permeability means a checking point. Okay, so that is the membrane made up of the lipid and प्रोटीन. लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर ही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. लिपिड अगर बात करें अपन, लिपिड स्ट्रक्चर इज नोन एज द फॉस्फोलिपिड. Phospholipid. Okay, that's wrong. Phospholipid. Phospholipid. Phospholipid से मिलकर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो लाइक दैट. Phospholipid structure. Phospholipid structures have the two main part. That's a hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophilic means water loving, water loving, water loving, water loving, water loving, and the tail is the water heating, water heating part. The arrangement of this phospholipid like that the sandwich model, like that the sandwich model means in the upper layer is the phospholipid, lower layer is the phospholipid, in between it's a tail, means head, tail and head. Okay, so now let's see. That's a arrangement of phospholipid like that. It is a that structures of the phospholipid molecules, that is a head and that is a tail, that is a tail. These phospholipid molecules are arranged is like the head are outer side and tail is a inward. That like, that's like, that's like, okay, that's like, that's like, that's a forming a bilayer of phospholipid. It's forming of bilayer of a phospholipid, in which two things, there are two proteins are present. First is the tunnel protein and second is the peripheral protein. Peripheral protein are arranged outside of the plasma membrane, but the tunnel protein are the इंट्रीगेटेड फॉर्म, मीन्स पूरे आर पार रहता प्रोटीन. दैट्स लाइक, ये देखिए, दैट्स कुछ भी प्रोडक्ट का इन बार होना इसके थ्रू तो क्या नाम दे दिया अपन ने, प्रोटीन चैनल. कौन सा प्रोटीन चैनल, तो नाम दे दिया इसका टनल प्रोटीन. दैट्स अ टनल प्रोटीन. इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी नाम दे सकते हैं इसको. और जो बाहर के प्रोटीन है दैट्स लाइक, दैट्स अ पेरिफेरल प्रोटीन. तो
generally overview of the phospholipids, the overview of the plasma membrane. Plasma membrane is made up of the phospholipid, and phospholipid generally the structure of phospholipids have the two main part, head part and tail part. Head part is the hydrophilic part, means it's the water loving, and this part are towards the water. Okay, and tail part, it is a water heating. It's a forward to the water. That's the structure of whole structure of the plasma membrane. Okay, clear? Next, perfect structure of plasma membrane, like that's a that is a phospholipid molecules. That's a head, and that's a tail. See that I drew exact diagram of the phospholipid molecules. See, and that is the interlinking between the head and tail. Phospholipid molecules made up of generally three parts. First, head is made up of phosphate. Head is made up of phosphate, and tail is made up of long chain of the fatty acid. Okay, so there are main three parts. First is the phosphate, means head made up of phosphate, and tail made up of the fatty acid. Both are interlinked through the glycerol. Okay, bacteria and eukaryotes. Bacteria is prokaryotes. Bacteria is Bacteria and eukaryotes share same basic structure, with while archaea have the marked differences. Means that bacterial plasma membrane and eukaryotic plasma membrane almost same, but archaeobacteria have the different structures of the cell membrane, because they are the living in the high acidity condition, high temperature condition, है ना? अपन ने पढ़ा अच्छे से वन बाय वन. Widely accepted model of the plasma membrane, we already know that the fluid Mosaic model is that uh, proved by and proposed by Nicholson and Singer. The two scientists, Nicholson and Singer, proposed the fluid Mosaic model of the plasma membrane. Phospholipids, that's a phospholipid have made up of the two major part: hydrophilic, means water loving, and non-polar region, that's a polar region. That's a non-polar region. Polar region, non-polar region is the hydrophobic, that's a water fearing, yeah, that's a water heating. Okay. Next, additional strength provided by such as the steroid and eukaryotes and the sterol, like the hopenoids in the bacteria, means say that the additional strength provided to the plasma membrane. Generally, plasma membrane is the less strength, not like of the cell wall. But अगर बात करें अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो सेल वॉल हैव अ मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द सेल मेम्ब्रेन. बट फिर भी इसके अंदर सम substances are present in there, like that the steroids and hopnoids in the bacteria. Means अगर बात करें अपन मोनो प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें, प्रोकैरियोट्स have the hopnoids and eukaryotes have the steroids. It is a additional strength, additional component, additional substances presence for the providing the additional strength. इंटीग्रेटेड प्रोटीन की बात करें अपन तो 70 to 80% इंटीग्रेटेड प्रोटीन. नाउ अगर पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें 20 to 30% इंटीग्रेटेड प्रोटीन.
We already know that's a integrated protein, and that's a outside the membrane, that's a peripheral protein. तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है वो कितने रहते हैं 70 to 80%, and 20 to 30% is the peripheral protein. Protein to phospholipid ratio of the bacteria is very high, means 2.5 to 1, means protein part is high in the bacteria as compared to the lipid. But and eukaryotes have the so the 1:1, mean proteins and lipids are same in ratio, same in ratio. Okay, but bacteria have the large protein. Bacteria has more protein as compared to the lipids in the plasma membrane or the cell membrane. But remember that eukaryotes have the multiple plasma membranes, one for every organelles. Means that प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंस है, सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंस है। सबके सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर यही स्ट्रक्चर्स आपको देखने का मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। द प्रोटीन ऑफ द फॉस्फोलिपिड रेशियो फॉर देयर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज 2.1, इज लाइक ऑफ द बैक्टीरियल, is like of the bacterial plasma membrane, just like the bacterial plasma membrane, and provide the additional evidence for the idea that the eukaryotes evolved from the bacterial ancestor. तो यहाँ से क्लियर होता है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स या कहेंगे जितने भी यूकैरियोट्स का अपन का फॉर्मेशन हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो किससे हुआ आपके बात करेंगे अपन किससे हुआ है तो प्रोकैरियोट से। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन mesosomes. Mesosomes the inner growth of the membrane. Membrane, the plasma membrane, that like that's a plasma, the cell wall, and it's a plasma membrane. Plasma membrane is the invaginate, and invaginate that the forming of the bag-like structure is known as the mesosome. Known as the mesosome. So mesosome से what are the important functions? So like that, locate of the mesosome in association with the nuclear area and near the site of the cell division. Suppose कीजिए ये सेल है, ये कहाँ पर जन्स होता है, म्यूजोसोम्स कहाँ, म्यूजोसोम्स का लोकेशन प्रॉपर कहाँ रहेगा, तो अपन कहेंगे म्यूजोसोम प्रेजेंस है आपके कहाँ पर, म्यूजोसोम है जहाँ आपके सेल डिवीजन होना होगा, यहाँ पर या कहेंगे न्यूक्लियर मटेरियल जा रहेगा, वहाँ ये बिल्कुल थोड़ा लिंक रहता है। दे आर एब्सेंस इन द यूकैरियोट्स, एब्सेंस रहते हैं यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होते ये। नेक्स्ट आपके सेल्टन ओवर 1976 have suggested that the mesosome are formed due to the vascularization of outer half of the lipid bilayer। मीन्स सेल्टन एंड ओवन ने बताया आपके 1976 के अंदर कि जो ये मेसोसोम्स का फॉर्मेशन है, मेसोसोम्स का आपके पूरा अगर कहे कि किस तरह से फॉर्म हुआ है तो वेस्कुलराइजेशन हुआ है। वेस्कुलराइजेशन किसका हुआ है तो लिपिड बाइलेयर का वेस्कुलराइजेशन होने की वजह से इसमें इन्वेजिनेशन हुआ और मेसोसोम्स का फॉर्मेशन किया। फिर मेसोसोम वाज सपोज टू टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन, कहाँ हेल्प करता है ये रेस्पिरेशन में, बट दे आर नॉट द एनालॉगस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, हेल्प जरूर करता है बट ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का सिनोनिम्स नहीं कह सकते, माइटोकॉन्ड्रिया का सेम पार्ट नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ दैट the like the outer membrane, which outer membranes have mitochondrial outer membrane have the resp- uh, respiratory enzymes for the involving in the respiration and means the production of the energy, contain respiratory enzyme and the component of the electron transport such as ATPase, dehydrogenase, cytochromes are either absent and present in the low amount. So that's the structures of the mesosome and what are the main function of the mesosome. So that's clear. Okay.
Mesosome begins formation of the septum and attach the bacterial DNA of the cell membrane. Means कहेंगे सपोज सबसे पहले सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होने से पहले इनके बीच में ऐसे सेप्टम बनता है, और सेप्टम बनने के बाद पहले क्या बनेंगे, ये मीजोसोम डिवाइड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इस तरह से दो आपके इसके अंदर मीजोसोम बनेंगे। फिर यहाँ से ये सेल डिवीजन होगा, तो एक सेल के अंदर एक एक मीजोडर्म आपके, सॉरी मीजो सोम्स आपके आ जाता है। इस तरह से ये एक मीजो यहाँ पे, और ये दूसरे सेल के अंदर आपके मीजोडर्म्स। ओके, तो ये अपन ने पूरी किसकी बात की, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बात की, और अपन ने सेकेंड थिंग किसकी, मीजोसोम्स की बात की है ना। मीजोसोम्स के क्या क्या फंक्शंस थे उसको अपन ने क्लियर करने की कोशिश की। ओके, एमसीक्यूज देखना। ओके, बाद में आगे मिलते हैं अपन पार्ट नंबर 10 के अंदर। बाय, टेक केयर।